बजाज सर। यस सर, गुड इवनिंग। मैंने ये गुड। लिंक अभी क्रिएट कर दिया, मैं भेज रहा हूँ उनको भी मेल पे, ठीक है? हाँ वही मैं देख रहा था कि आपने बिफोर टाइम कर दिया। ठीक है, अभी भेज दो सर।
हेलो राजेंद्र सर। मैंने फोन पे भी बात कर ली उनकी, बजाज सर। हेलो राजेंद्र सर। क्या बोले हाँ वो? हाँ, वो मतलब उन्होंने देखा नहीं था तब तक, तो मैंने तो इसीलिए मैंने बोला चलो मैं फ़ोन करूं, तो अभी उसे देख लिया, बोला चलो ठीक है मैं अपना ये वेबसाइट पे इसको अपलोड कर देता हूँ। हाँ, चैनल भी कर सकते, वीडियो भी कर सकते हैं, और वो नहीं, चैनल भी कर सकते वो अपने चैनल में करता हैं। है, हाँ हाँ, वही दोनों भी। यस वो चैनल में करेगा। यस यस, ठीक है। अनिल सर, राजेंद्र सर, हाँ हाँ, अनुभव। हाँ बोलो। डॉक्टर्स को इनवाइट करना शुरू कर दो क्या? बोल दो क्या ज्वाइन करने के लिए? अभी या हाँ पाँच हाँ, दस मिनट बाद बोलूँ? नहीं नहीं, बोल दो बोल दो, हम इसको कर रहे हैं, 2 मिनट में ब्रॉडकास्ट शुरू कर दें। आप बोल ठीक दो ना, और क्या। ठीक है ठीक है ठीक है। तो लिंक ओपन कर लें क्या डॉक्टरों की एंट्री के लिए? सर पैनलिस्ट के लिए भी तो बोलना पड़ेगा ना उनको, वही मैं बोल दे रहा हूँ, पहले वो ज्वाइन कर लेते हैं, फिर डेलीगेट्स के लिए ओपन कर लीजिए। ठीक है ठीक है, तो वो तो कर ही दो यार, पैनलिस्ट का हाँ लिंक। मैं बोल देता हूँ मैं। बोल दो बोल दो। राजेंद्र सर, अनिल सर, इन्फॉर्म कर दिया मैंने डॉक्टर्स को, वो अभी शायद ज्वाइन कर लेंगे 5-10 मिनट्स में। हाँ, तो हम 6:50 पे लाइव कर देंगे डॉक्टर्स के अटेंडेंस के लिए। मैंने बोल दिया है, वो अभी ज्वाइन कर लेंगे 5-10 मिनट्स में, बोला उन्होंने। अनुभव, डॉक्टर गुरुनाथ से बात हो गई?
वेलकम नोट उनसे बात हो गई थी। वेलकम नोट के लिए मैंने बोल भी दिया था उनको, और थोड़ा उन्होंने एजेंडा के हिसाब से जो उनको इंट्रोडक्शन चाहिए थे कुछ डॉक्टर्स के, वो भी सेंड कर दिया था मैंने। तो बना के ही देना था ना। नहीं नहीं, उनको बना के नहीं, उनको सिर्फ 2 लाइन बोलना था। तो बायोडेटा ही मैंने मंगवा लिया था डॉक्टर से सामने, तो उन्होंने मेल कर दिया था, मैंने वही फॉरवर्ड कर दिया था उनको। क्योंकि बेसिकली उनको एक ही डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करना है, डॉक्टर गणपति को, प्रोफेसर गणपति को, अच्छा, क्योंकि बाकी वही को। चेयरपर्सन। बाकी को नहीं करना है, क्योंकि गणपति फिर बाकी डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, ही इज द सीनियर मोस्ट। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन गुड ठीक गुड है, इवनिंग ठीक। सर। Good evening. Can you hear me? Yeah, Yes sir. sir, I can Good hear you evening. sir. Good evening. We can hear you. We can see you, sir. Yeah. Okay. Fine. Good. Okay. Fine. Right, sir. Right, sir. I'm already on the line. Hi, Arpan. Good evening sir. Good evening. Don't ask any uncomfortable question to me, okay? What is the flow, man? Just tell me. I'll introduce the panelist and that introduce the session and the panelist. That's all, no? What is our role? Yes. I'm not You very will sure. introduce the panelist, and then the two cases will be presented, one primary and one secondary. And then all five of us will discuss, including presenter, George, Sriram, you and me. After that, Sriram will talk for a few minutes, and then mainly George will talk for 10-15 minutes. After that, audience questionnaire, which I am supposed to moderate on the chat box or whatever way. And I may ask what is your practice or something. Any particular questions you want to raise or something? Maybe practice patterns. What do you do for associated hypertension? Those things you can ask. What do you do? Or in pregnancy, how do you do? Like that? That's okay? Pregnancy is one issue. Yeah. I was seeing one of my presentation in 2015 in Calcutta about adrenal insufficiency. So nice information. It looks like that I'm only learning from there. 5 years back. So much time I've taken here. What is the other thing? Anything new exciting going on? In adrenal, yeah, maybe we'll talk about a little bit about regenerative therapies, something like that. Like? Rituximab and Rituximab for what? some people have become cured of this. And then also depot ACTH depot injections. Depot injection, yeah. Yeah, I will not. I don't know much. You ask her. Okay, that's a new thing. My job is to ask questions. But very nice. And also some people who have a low quality of life. There are some people who have a low quality of life. In them, actually, you can use subcutaneous infusions. But is that practical? No, I mean, these are the exceptions. Now, some people say, no, I can't tolerate this, that, and all. Then you could also ask about any changes you want to make when the patient is having diabetes. For example, if the patient is having diabetes, especially type 1, and if you want to use hydrocortisone, they may get hypoglycemia. So it's always preferable to use prednisolone in those patients. And then other associated dynamics, like if your patient is on an anticonvulsants. So the anticonvulsants like phenytoin, all these things will usually... It is a metabolism, yes. Metabolism of mainly the halogenated glucocorticoids like dexamethasone and this one. Similarly, rifampicin, predominant action on hydrocortisone. So those are some fine tuning we require to do it.
And then how often we want to use it. See, we normally use it twice a day. I use it thrice a day. An occasional patient may require 4 times a day also.